Hazur, we are all aware of the fact that for an Ahmadi Muslim man to marry a woman following any book, for instance a Christian or a Jewish individual, he must first seek the guidance and permission from Khilafat. This is why my question is regarding Islam in general. We know that a Muslim man can marry a Christian or a Jewish woman, but why is it that a Muslim woman cannot marry a Christian or Jewish man? A friend of mine raised this allegation and claimed this is inequality. How do you suggest I respond? अच्छा, बात यह है कि inequality इसलिए जो you can marry a girl who is not Muslim, right? So she will live under your influence. लड़के का या मर्द का अपर हैंड होता है ना, लेकिन अगर तुम्हारी मुस्लिम वुमन मैरीज एनी ऑफ द क्रिश्चियंस, शी विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज द रिलीजन ऑफ हिज हर हस्बैंड हैं. सो दिस इज़ वाई इस्लाम सेज कि क्योंकि औरत कैन नॉट रेजिस्ट, ठीक है, इसलिए इस पर she is not permitted to marry a man who is not of her religion.